हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चोकसी। आज एक और दमदार कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं और आज तो दमदार के साथ साथ मैं कहूंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के मैनेजमेंट से हम बात करने वाले हैं बिकॉज वन ऑफ इट्स काइंड लिस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों की। मैं बात कर रही हूँ R.K स्वामी कंपनी के आईपीओ की। कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के ग्रुप सीईओ मिस्टर शेखर स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस। Thank you. Very nice to be here. All right, sir, we'll come to you for the questions, but उससे पहले हमारे व्यूअर्स को कंपनी के बारे में और इशू डिटेल्स, आईपीओ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट R.K Swamy. Company was founded in 1973 and R.K Swamy Limited is engaged in the business of integrated marketing communications. जी हाँ, अलग तरीके का बिजनेस और काफी ही इनोवेटिव बिजनेस. कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडीज, इस सेगमेंट से ताल्लुक रखती हुई कंपनी R.K स्वामी कंपनी जो है वो डेटा ड्रिवन है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है दैट लेवरेजेस डिजिटल इनिशिएटिव्स एक्सटेंसिवली across all areas of the business. FY 2023 की अगर बात करें, कंपनी did publish more than 818 creative campaigns on behalf of its clients across various media. साथ ही it also processed more than 97 terabytes of data and conducted over 2 million consumer interviews in the form of quantitative, क्वालिटेटिव और टेलीफोन सर्वेज. कंपनी के न्यूमरस क्लाइंट बेस हैं और जब कंपनी की क्लाइंट बेस में देख रही थी, लिटरली इट वाज सच अ लॉन्ग क्लाइंट लिस्ट, जहां लिस्टेड कैटेगरी से जुड़ी कंपनियां, अनलिस्टेड कैटेगरी से जुड़ी कंपनियां भी हैं. कुछ नामी कंपनियों की अगर बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ, सेरा सैनिटरी वेयर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, EID पेरी, हैवल्स इंडिया, हॉकिंस कुकर्स, ये सारी की सारी कंपनियां और इससे भी ज्यादा कंपनियां लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, ONGC, रॉयल एनफील्ड एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. सो एक बड़ा क्लाइंट बेस है कंपनी के पास. द कंपनी एम्प्लॉयज अराउंड 391 people across 12 offices and 12 field offices in 12 cities in 3 business segments. So ये तो हुई कंपनी से जुड़ी एक ब्रीफ में जानकारी. आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी plans to raise 423 crore via the issue, out of which 173 crore will be raised via the issue of fresh equity. इशू की डिटेल्स में डेट्स की अगर बात करें, 4 से 6 मार्च तक खुला रहेगा इशू. प्राइस बैंड इसका 270 से 288 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है. लॉट साइज 50 शेयरों की होगी एंड पॉसिबल लिस्टिंग डेट जो है 12 मार्च की तय की गई है. सो इशू की डिटेल्स और कंपनी की ब्रीफ में डिटेल्स हमने जान ली. अब सीधा बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर शर्मा से, शेखर स्वामी जी से. शेखर सर, थैंक यू अगेन एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर कमिंग इनटू द कैपिटल मार्केट सेगमेंट. एंड सबसे पहले तो मैं आपके पास से ही आपके बिजनेस को समझना चाहूंगी बिकॉज लाइक वी से R.K स्वामी इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल स्टॉक मार्केट डेब्यू. It's the first ever IPO in India by a major integrated marketing service group. So अलग तरीके का IPO आ रहा है, अलग तरीके की लिस्टिंग हो रही है. आपका बिजनेस मॉडल आप ही की जुबानी हम सुनना चाहेंगे, बताएं सर. देखिए, अभी इफ देयर इज वन वर्ड जो हमारा कंपनी को डिस्क्राइब करते हैं और हमारा कोर फोकस है, दैट वन वर्ड इज मार्केटिंग. जो भी हम करते हैं, हमारा रेवेन्यूज मार्केटिंग बजट्स ऑफ कंपनी से आते हैं. द मार्केटिंग बजट्स ऑफ कंपनीज, आई मीन दिस इज नोन एंड इट्स ऑब्वियस, it's a operational, what do you call, OPEX. It's a P&L charge every year. हर साल कंपनीज मार्केटिंग बजट्स allocate करते हैं. सो इसका एडवांटेज ये है दैट द मार्केटिंग बजट्स गेट रिफ्रेश्ड एवरी ईयर. सो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अ रिवर विच इज अ फ्लोइंग रिवर, एंड वी हैव बीन फिशिंग इन दिस फॉर 50 years. So it is a space which is जो अभी पिछले 10-20 साल में लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं. एक्चुअली ये सर्विसेज जो है, ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आउटसोर्सिंग बिजनेसेस है. कंपनीज के लिए जो काम हम करते हैं वो खुद नहीं कर पाएंगे. सो इफ यू आर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन, इफ यू आर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स एट स्केल जो हम कर रहे हैं, they are outsourcing to us because these are not capacities they can create internally. Some little bit they can create. They create a capacity to manage the service, but they don't create the capacity to execute the service. Right. So इसके लिए
the marketing budgets is our bread and butter. So that's the first thing that we need to understand. The course of our journey, हम यहाँ कैसे पहुंचा? तो हमने शुरू किया 1973 में, जब मेरे पिताजी ने शुरू किया इसको. It was an advertising agency. Advertising क्या होता है? If you remove the jargon, advertising words and pictures को integrate करता है. It is nothing but putting words and pictures together. Obviously, interesting होना चाहिए, appealing होना चाहिए, creative होना चाहिए. So यही तो हमारा DNA है. Last 50 years we are only putting words and pictures together. Television आया, then the craft of television is different. So filmmaking was important. The craft involved music, the craft involves talent, the craft involves casting. So वो अलग तरीका का एक craft हो जाता है. Then we came along. We the craft of advertising changed. वो language भी बदल गया. So advertising in today's digital world, they call it content. अगर आप इसके बारे में सोचे तो content भी वही है. We putting words and pictures together. So we have been preparing for the content world for the last many decades, if you will. So हमारा जो pivot हुआ 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले, we became a substantial content creator at scale. So that is the other piece that has come into play in a significant way for us. As far as the research piece is concerned, is AB marketing activity है. Clients want feedback. वो जो companies है, उनके customers है, they are all over the place. Millions of consumers are being served. So वो consumers क्या सोच रहे हैं, कैसे behave कर रहे हैं, what is their purchasing habit, what are their cultural norms. So lot of requirement is there from a company's point of view, where they need a feedback. ये feedback loop जो होता है, जो कहते हैं, इसका market research का the language used is market, but market research is nothing but feedback from the consumer. So that is an interesting requirement for us to improve the quality of our own work. So जब company शुरू हुआ 1973 में, उस time में भी हमारा company में एक बहुत बड़ा market research department था. वो department को हमने एक अलग company बनाया, and that became Hansa Research Group. Right. The third important development जो हम देख रहे थे 2000 करीब उस टाइम पे 2005, 2010, technology came into marketing. And technology came into marketing, and there are a lot of categories of business where there was a lot of customer data. जैसे a bank, take a bank for example. बैंक को तो उनका कस्टमर के बारे में सब कुछ मालूम है, कौन बैंक अकाउंट रखता है, क्या केवाईसी बोलते हैं, केवाईसी की वजह से सब मालूम पड़ जाता है. What is the amount money they have, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, हाउसिंग लोन है, जो भी है, द बैंक नोज एवरीथिंग. कितना पैसा आता है महीने में, कितना पैसा खर्च होता है, how many linked accounts they have. So there's a lot of information that the banks have. So categories like banking, automotive, banking, financial services in general, retail, direct to home, broadcasting, the entire digital world of e-commerce, ये सारे companies के पास इतने data है that it requires them to analyze the data. Right. So analysis करके वो marketing के लिए बहुत फायदा होता है. So they run customer relationship management programs. ये चलाने के लिए technology platforms है, जैसा Salesforce, Oracle, Adobe. ये लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं और कंपनीज खरीदते हैं, पर लेकिन चलाने के लिए भी आदमी चाहिए, एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर.
to run these platforms for the companies. So हमारा धंधा जो है, जो हम कस्टमर डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये हमारे लैंग्वेज में मैनेज सर्विसेज कहते हैं इसको. So we Mm-hmm. go into the companies, the clients employ us to manage the services for them. And ये भी at scale होता है. And data ऐसा चीज है, data is refreshed every day. Right. So if I send out a campaign, that campaign also throws up data. So जो analysis करना है इसके लिए, segmentation करना है, codify करना है, data platforms develop करना है, and उसके ऊपर sensible campaigns चलाना है. They're all activities which are happening at scale these days. Absolutely. And companies are also learning more and more of how to use the data. So simple, बोलने के लिए simple चीज है. We are in the marketing center. Communications भी करते हैं, which is digital content today at scale. Feedback loop करते हैं, which is market research. And customer data analytics, which is using data to enhance the marketing. It was great, absolutely great to know about the business. And आप सही कह रहे हैं, Mr. Swamy, that it's a very unique and a different kind of a business in itself. और ये मुश्किल भी है क्योंकि आज की तारीख में कम्युनिकेशन करना और राइट कम्युनिकेशन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है. गोइंग अहेड, प्लान्स क्या है इस आईपीओ से जुटाई गई पूंजी के साथ, क्या करेंगे, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, करंट बिजनेस प्लान्स क्या है, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स क्या है और क्या कुछ स्ट्रेटेजाइज करेंगे आईपीओ के बाद? So ये actually हमारा requirements है, they are fairly simple, easy to explain, and we have करीब 4-5 या 6 नया इनिशिएटिव्स भी हम सोच रहे हैं करने के लिए. पहला आईपीओ का कैपिटल रेस क्यों कर रहे हैं उसके बारे में I'll explain. Very simple, एक quantum of money required for improving infrastructure. करेक्ट. मैं ऐसा बोलूंगा आपको, लोग ऐसा सोचते नहीं, बट मार्केटिंग एग्जीक्यूशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ओके. एंड वी आर अ प्रोवाइडर ऑफ दैट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट आवर क्लाइंट्स प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड. सो when we think of infrastructure, जैसे हमने we have a customer experience center which we run, which is largely in the data space. We run कस्टम कंप्यूटर एडेड टेलीफोन इंटरव्यू करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए एक लार्ज कैपेसिटी रखे हैं, एंड फॉर डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन के लिए भी कैपेसिटी एनहांस करना चाहते हैं. एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड ऑफ कोर्स इज कंटिन्यूअस रिफ्रेशमेंट इन आईटी. सो इफ आई लुक एट द बास्केट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट इन्वेस्टमेंट that is listed in the RHB, it comes to about, if I take the digital video piece, the IT refresh piece, and the CX and CATI piece, it is, I've said, it will be about 60 to 70 crores. It is listed in the document. This is one requirement we have. दूसरा requirement we have is, in our business, हमारा तो services business है. So heavy investment in capital equipment and land and building and machinery, उसका तो जरूरत है ही नहीं. However, capital in our business is working capital. So Right. जब भी हम नया initiatives लेते हैं, and अभी आपको 4-5 बताऊंगा उसके बारे में, वो initiatives के लिए हमको high quality talent hire करना पड़ता है. True. That initiative will not produce result immediately. However, the team has to be compensated and ideas have to be developed. Proof of concept has to be developed, and then only we can take to market. So एक काफी gestation period रहता है. 6 महीना होगा, 12 महीना होगा, 18 महीना होगा, जो भी होता है. So we are at that time in our language, we are doing R&D. Absolutely. What will be the service and how will it have an impact beneficial for the client? Whatever we do, we have to finally produce services which are working to enhance that marketing investment, efficiency of the marketing. So, एक इनिशिएटिव है, अभी हमने लॉन्च भी किया है. इसका नाम हम रखे हैं R.K Swamy सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंडियन मार्केट.
हम्म। अब एक चीज सोचिए, इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, इतना जी। कॉम्प्लेक्स है, इतना डाइवर्सिटी है, culturally diverse, linguistically diverse, the community wise, so many communities. We are the ultimate market in terms of complexity. There are so many things we can study in this market. And Very true. by segment, if we do it and we apply that learning to improve the marketing, those fundamental studies of the kind we are thinking about, कोई नहीं कर रहा है, जी। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है. There is some economic surveys that happens at the central government level. But if you talk about community kind of research, consumption type of research, मैं आपको अभी एक example भी दे रहा हूँ. These are not done. Media kind of research. So recently, World Cup cricket was conducted, happened. Right. World Cup cricket. So हमने ये सोचा कि World Cup cricket, how did India watch World Cup cricket? A very simple question. The broadcaster is claiming something. The OTT platform is delivering something. OTT platform, basically in this case, it was Star and Hotstar. So, but what was the engagement from the viewer side? So, हमने एक study किया है. We called it Advertising Impact Measurement, AIM study, relating to World Cup. Simple. So, we studied the viewership patterns of the 12 India matches. So now we are the only people, we have information on how cricket was watched. एक simple सवाल पूछ रहा हूं आपको. How many women watched World Cup cricket? Are they watching it with the men? Are they watching it alone? Is it a family viewing? Okay. It's a very important question for an advertiser. Absolutely it is. करीब 200 advertisers थे World Cup cricket में. Which are the advertisers whose messages were remembered, whose message really connected with the consumer? This is pure data, which is 4,000-5,000 of crore का most use. advertising, pure data which we can use, which advertisers can use, our clients can use to enhance their connection with the sport and their connection with the consumer. True. So, I say there are many examples like this. Many such studies are possible. And ये सब हम ला रहे हैं R.K Swamy Center के अंदर. And we can do it because we have a research operation. We can collect data. We have the machinery to collect the data and the people to put this all together and make some intelligent conclusion out of it. एक example है बस. Very The second interesting. initiative we are going to do. दूसरा initiative है R.K Swamy Brand and Marketing Consulting Group. सालों साल, I mean, clients come and say, boss, इसको मेरे को ये marketing का क्वेश्चन का जवाब दो, ये नया प्रोडक्ट करना है, कैसा करना है, ये नया मार्केट में जाना है, व्हाट आर द इश्यूज. कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हमेशा आते रहते हैं. समटाइम्स वी एंगेज, लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट एंगेज बिकॉज वी डोंट हैव द पीपल और द बैंडविड्थ. सो हमारा सोच ये है कि इसका अलग से एक ग्रुप बना दें एंड दैट इज it is for our existing clients only. We don't have to go searching for new clients. New clients भी आएंगे, ऐसा नहीं है. But the capacity for brand and marketing consulting with our capacity for creative communication and conducting research plus data analytics, combination of this with an added layer of consultancy, Right. in our view, will be a very good requirement for the client. तो ये भी करने वाला है. इनोवेशंस तो काफी सारे हैं और सारे के सारे इनोवेशंस काफी इंटरेस्टिंग भी नजर आ रहे हैं और इसी से पता चलता है कि हाउ यूनिक द कंपनी एंड द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर इट इज. मिस्टर शेखर, फाइनेंशियल्स भी आपके हम देख रहे थे और इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल्स देखते हुए हमने ये भी पाया कि रेवेन्यू में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही प्रॉफिट्स इनफैक्ट दैट रोज बाय 62% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31st 2023 and March 31st 2022.
बट ऑफ कोर्स एक डिप भी देखने को मिला था मार्च टू सितंबर 2023 बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. क्या रीजंस इसके पीछे और किस तरह से देख रहे हैं गोइंग अहेड आप मार्जिन्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू सिनेरियो, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ओवर इट. या ये सी हमारा बिजनेस जो है, सी वी गो whatever information is out there is strictly as per the requirements of the regulator, which is correct, no problem. The let's go back in time and look at the seasonality in the business. खाली हमारे लिए सीजनैलिटी नहीं है, ये पूरा सेक्टर के लिए सीजनैलिटी है. हमेशा साल हमारा रेवेन्यूज है 22-23 में की बात कर रहा हूँ मैं, एंड यू कैन गो बैक एंड वेरीफाई दिस, इट विल बी द सेम. 40% of the revenue is in the first half. 60% of the revenue is in the second half. This pattern is a set pattern. Right. However, cost is evenly spread through the year. So, हमेशा आपको पिछले कई वर्षों में देखिए, profitability will be muted in the first half. And the company and the sector itself is very easy. देखिए to March हमारा फाइनेंशियल ईयर है देश में. जी. फर्स्ट क्वार्टर में बजट्स रिलीज होता है, सेकेंड क्वार्टर में मॉनसून क्वार्टर है, सो स्पेंड्स आर ऑलवेज लोअर. थर्ड क्वार्टर में आपका आता है फेस्टिवल सीजन, स्पेंड्स गो अप. फोर्थ क्वार्टर इज द लास्ट क्वार्टर, सो बजट्स हैव टू बी एग्जॉस्टेड एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन. सो ये anybody analyzing this should analyze this company and this sector on an annualized basis. 6 महीने का इंफॉर्मेशन देना है, हमने दे दिया. Go back and see what the patterns are, and आपको clearly नजर आएगा whether it is going up or going down. एब्सोल्युटली. सालाना आधार पर वो परफॉर्मेंस दिख भी रही है, और इनफैक्ट डिजिटल रेवेन्यू शेयर की अगर बात करें, दे डू सी अ राइजिंग ट्रेंड. इज द मेजर रीजन फॉर द स्टडी 524 basis points expansion in your margin from 20 to 97% in FY23. और कितना राइज होता हुआ, हाउ इज इट बीन, किस तरह से की ड्राइवर्स हैं आपके मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे, और कस्टमर्स किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट इट. एंड आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवरसीज प्रेजेंस भी है आपकी, सर, राइट? ओवरसीज हम बाद में बात करेंगे, दैट्स अ स्मॉल पीस, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव यूज्ड इज डिजिटल. सो डिजिटल is no longer an evolving situation. Digital is already here. It is, Right. we are all immersed in digital only. So digital का एक, it's a very simple common sense सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको. आपका वीडियो में आप क्या कर रहे हो? आपका हैंडसेट मोबाइल में आप क्या कर रहे हो? आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो. Yes. What is that data? You are consuming video. Yes. आपको वीडियो अच्छा लगा, you pass it to your 10 other groups. Right? So information in the digital world is flowing only in the form of videos. Is a factor. जो जितना भी videos आ रहा है, to compete with that you need more videos. ये भी एक अनोखा situation है. The more content there is, the more content is required. Yes. So अभी company के बारे में सोचिए. Companies have their own media, which is in the form of their website. Companies have the opportunity to go and put out their information in paid media. And companies have also something called earned media, which they have earned, and there are ways in which they can popularize the content they have. So आजकल क्या हो रहा है? Everything in the company's communication requirement, without video you cannot work. Yes. So ये ऐसा माहौल है where more and more production of digital content is required. And this is exactly what we are doing for our clients for many years now. So digital, इसलिए हमने infrastructure भी करने के लिए, investment के लिए भी एक digital video studio के लिए भी allocation of investment money has been kept. So that what is driving this is that in fact we are एक ज़माना था एक client का एक commercial बनाया 2-3 महीना लगता है. If they produce 2 commercials a year, they think they have done a lot of production.
अभी हम कर रहे हैं for various clients, we do dozens of videos I'm per sure. client. Okay. और उसको हमारे देश में multiplied by languages. Yes. The numbers explode. बिल्कुल. And this is the, and we have, ऐसे मेरे opening remarks में भी बताया कि हम 50 साल में हम क्या कर रहे हैं. I said we put words and pictures together. Yes. So words, pictures in the digital format is content in video form. So this is a very explosive reality around us. And as a communication content creator, we have to be, we are certainly producing more and more for our clients. So this is a reality. This is a driver of the business over the last few years. And if you look at our other segments, data analytics is a business which is entirely digital. There's nothing there we do which cannot, which is not dependent on the digital ecosystem. And usme data is again, there is a tsunami of data. There's so much of data coming out. Companies are swamped by it. And therefore, the requirement for intelligent analysis and application of the data for business results is ever increasing. Correct. So, usme bhi, and we were actually early. We started that when there was no discussion. 2008 में कौन बात कर रहा था data के बारे में. So हमने start किया. Let's experiment with this. And 5 साल लगा हमको. We were wandering around, putting the pieces together. So that's the amount of investment we made in, back, whatever, 2008 to 2013-14 time frame. So uske baad, then we arrived at a mix, and now it is a business which is got its own steam. So research again is the same thing. So अगर आप देखें तो what is the future and why are we thinking of what we are doing? एक तो मैंने बोला काफी initiatives है. दूसरा है हमारे existing client का भी demand है ना. So बिल्कुल बिल्कुल. ये में what we have to do, I always say, go hug your client. जाके वहां बैठ जाओ. They have lots of demands. They have lots of complex problems they are trying to solve. How can we help them? Yeah. We are a professional services company. Our professional services has to be at the cutting edge, and our clients must derive better and more value from what we do. Correct. अगर ये strategy हम pursue करते हैं, clients बोलेंगे चलो ठीक है, ये हमारा partner अच्छा partner. If we are a good partner, there is value that we have derived in the past, and I'm sure clients will engage with us to continue the service. So first strategy, everybody says आपका strategy क्या है? मेरा पहला strategy है कि भाई clients को अच्छी तरह से देख लो. That's my first thing for people. Then of course we will obviously grow. They're also growing. Then there are new clients that we need to engage with, new sectors we need to engage with. हमारा 3 sectors है where we are very strong. BFSI contributes 1/3 of our business. Automotive contributes 20% of our business. FMCG and consumer products contribute 20% of our business. We have experience in all kinds of sectors which we have over the years. So strategy can be summed up, it's all there. Initiatives jo hai, they're there, visible. They will take some time. All initiatives always take time. That is fine. We are not putting any time frame to it. But naya, if I may say, innovations have to keep coming. Second piece is existing businesses jo hai, usko अच्छी तरह से देख लो and keep working closely with the customers. बिल्कुल. Third piece is what you refer to geographically, क्या कहाँ क्या कैसे करें. So geographic expansion is something that we can do. But वहाँ भी what we are doing is we are taking disciplines which are not culturally sensitive. So an analytics service is required
the same service is required in Dubai or Singapore or Mumbai or wherever. So Yeah. the technology piece is the same piece. So we are now put probes into probe. Matlab we are still and we are making very initial efforts in the Middle East and Bangladesh and places like that. Okay. ये कहाँ तक जाएगा अभी we are not putting any projections on any of that. Yeah. But it's a learning game. There's one thing that we don't want to lose sight of is again that word learning. Absolutely. Keep learning. And what the interesting thing about our business is clients से हम बहुत सीख सकते हैं. Clients are Yes, very very open. true. We have a very vast repertoire of customers. Last year we served 400 plus clients. 475 is the number in the book. So इतने categories, itna complex consumers and relationships. The more we engage with them, the more we are learning. So हमेशा एक learning learning mindset पे चलें. बिल्कुल. And India is a very good market because it keeps us on our toes. So that way, there's nothing said about this country. It's a very competitive and wonderful place. We are very vested and invested in this country. So हमको तो ये तो this is the most important thing in all this is हम teams को भी यही बताते हैं. Let's enjoy the work. That's If very we enjoy important. the work, we will do good work. And I say to people who come to us also, they come because they're attracted to the space. Correct. And they want to work in a space where there is freedom to work. There is, enough, if I may say, professional juice or complexity from which they can learn. अगर वो Absolutely. enjoy करते हैं, वो learning करते हैं, our clients get benefit because we can provide better and more sensible service to them. Then there is a certain DNA that kicks in across the system, and we think we can all learn and grow. I think that's if you ask me, whatever we are doing, was we like what we do, and यही तो करते हैं और क्या करते हैं. I agree completely to you that India is a land of opportunities. बहुत सारी चीजें हैं यहाँ करने के लिए. And at the same time, जिस segment की आप बात कर रहे हैं, ये segment अपने आप में ही इतना unique है. And at the same time, when you rightly say that we are immersed in digital, and digital is the new big, which has already did come in. कोविड के टाइम से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना मायने रखता है इसे हम समझ गए और अब तो वहां से और आगे बढ़कर इनोवेट होने का समय है. सो इट्स अ ग्रेट बिजनेस, इट्स अ ग्रेट सेगमेंट इन विच you are already there and now you are coming into the capital markets. बहुत शुक्रिया आपने समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको लिस्टिंग के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए मिस्टर स्वामी ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. Thank you so much.